Good morning, dear students. Let's discuss the topic which is clock. Okay. So different types की problem है, try करते हैं solve करने के लिए. The question is, at what time between 3 and 4 o'clock the hands of the clocks are coincident? At what time between 3 o'clock and 4 o'clock at what time between 3 o'clock and 4 o'clock the hands of the clock will be at the same location or coincide. Okay, hands of the clock will be at same location और coincide. ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए बात है coincide, अंडरलाइन करें इस बात को. coincide means what? The angle between these two will be 0. Okay, or at the same location means what? The angle between the hour hand and minute hand will be at the same location. That is the meaning of the clock hands are getting coincide, means angle is 0. So let's start with the formula what we have. Okay, required time. For the required time we will have one formula we have. Let's start. Required time. The required time is equal to the required time is equal to, that is we represent with t. T is equal to 2 by 11 into 30 into h, 30 degree into h, that is our plus angle. This is the formula we have. Okay, so A for angle. ठीक है, this is your this is not 30, this is 30, this is angle, this is our hand. So required time is equal to T is equal to 2 by 11 30h plus A angle. So A angle जो है यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए? कोइंसाइड कर रहा है, मतलब लेट्स सी कि ये जो आपका क्लॉक है, तो मान लो कि 12 6 this is your 9 this is 3. So if this is our hand and this is your, the question is 3 to 4 के बीच में. ठीक है, let's see, this is 4, this is 5, this is 7, this is 8, 9, 10, 11, 1, 2. समवेयर बिटवीन दिस 3 to 4 के बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है, दिस इज योर आवर हैंड, सॉरी मिनट हैंड, एंड दिस इज योर आवर हैंड. ठीक है, दिस इज योर आवर हैंड एंड दिस इज योर मिनट हैंड. ठीक है, तो बोला जा रहा है, बस एक मैंने एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, ये तो प्रैक्टिकल जो आपको ये जो फॉर्मूला है वो बताएगा. पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे टाइम पे दोनों हैंड्स जो है कोइंसाइड होंगे. ओके, तो फॉर्मूला लगाइए. फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए. कोइंसाइड कर रहा है मतलब दोनों हैंड्स, दैट इज मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर एट सेम लोकेशन, दैट इज एंगल इक्वल टू 0 डिग्री ना. सो पुट हियर 0. ओके, सो t is equal to 2 by 11 into 30 h plus 0. ठीक है, that is 2 by 11 into 30, 2 by 11 into 30. ठीक है, 3 to 4 के बीच में, तो आवर जो हैंड है h के जगह पे आपको 3 लेना है. ठीक है, that is your 2 by 11 into 30 into 3. ठीक है, after solving you will get some value, that will be the answer. Let's solve it. So it will be
16 16 4 11, that is after solving that you will get 16 4 11. Okay, 16 4 11 minutes. This is 16 4 11 minutes. Okay, past hand. ठीक है, this is minutes hand, minutes 60 2 by 11 30 by h plus a minutes past hour, minutes past hour, minutes past hour, past hour. This is the formula. So you can do, this is 16 minute 4 by 11 minute past 3. Okay, that is the result. You can write minute past 3, 6 by 16 4 by 11 minutes past 3. At this location, at this time, the minute hand and the hour hand will be at same location, that is the angle between them is 0 degree. So this is the first question. Next, continue. At what time the angle between 4 am and 5 am will the hands of clocks be right angle? At what time hands of clock between 4 and 5 will be at right angle? At what time between the 4 and 5 the hands of clock will be 4 and 5, 4 से 5 के बीच में. ठीक है, ऐसा कौन सा लोकेशन है जिस लोकेशन पे आपको जो एंगल पड़ेगा, ठीक है, इज 90 degree. So this is our question. So let's try. Similar pattern is there. Let's try. Required angle is how much? 90 degree. Right angle now. Required angle is 90 degree. So there is one trick is here. See this. Since our formula is what? T is equal to 2 by 11 30 h plus minus a. See here, what is a? Right angle triangle. Right angle, that is the meaning is what? Right angle, that is your 90 degree. Fine. Here two possibility can be there. Okay, so 4 to 5 के बीच में जो आपकी एंगल बनेगी 90 डिग्री, वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्लॉक बनाइए. So this is your 12 6, this is your, hold on, 3, this is your 9. Okay, so this is 1, this is 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो 4 to 5 के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल बनना है. ठीक है, एक कॉमन सा चीज आप गेस कर सकते हैं. देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी. लेट्स से इफ दिस 4 इज हियर, दिस लेट्स से दिस आर हैंड इज हियर. इफ दिस आर हैंड इज हियर and somewhere minute hand is here, let's see, minute hand is here, if hour hand is here and minute hand is somewhere here. As you can see, 190 degrees possible. See this one, 190 degrees possible. Okay, another thing what happen कि let's say कि मान लो कि ये आपका, हालांकि पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही होगी, मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ. दिस इज योर एंड दिस इज योर समवेयर. सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. सो देयर इज टू पॉसिबिलिटी. जस्ट एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है. दो पॉसिबिलिटी है आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनने के, दैट इज 90 डिग्री बिटवीन द मिनट हैंड एंड हावर हैंड. सी, सो लेट्स स्टार्ट. To check whether I should go plus a or minus a, let's check that one trick. If 30 into h is greater than the angle required,
30 into h is greater than the angle required. Check that value. 30 into h. What is h? You have to take h. You have to take 4 to 5. That is initial one. 4 into 30. That is definitely greater than your right angle. That is 90. 120 is always greater than 90 now. See this one. You can apply that. See, since we have h into 30 is greater than your angle, so we will have 2 timings for which angle is 90 डिग्री. दो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी के टाइम हमें क्या होगा, एंगल जो है 90 डिग्री मिलेगा. सो लेट्स ट्राई विद दैट पॉसिबिलिटी. क्या क्या हो सकती है, ठीक है. लेट्स सी. 2/11. द फर्स्ट इज 2/11. Two possibility can be t is equal to 2/11 30h plus how much, 30h plus a. Now t is equal to 2/11 30h minus of a. This can be possible. So put that value 30h into a. मिनट पास्ट 4 लिखना मत भूलिएगा. मिनट पास्ट आवर, दैट इज 4 यार. मिनट पास्ट 4, ठीक है. सो दिस इज योर 2/11. 30 into h, that is 4 plus a 90. Now t is equal to 2/11 30 into 4 minus of 90 past 4. This is past 4. Okay, solve it. That will be 120 plus 90. 120 plus of 90. After solving this value, you will get some 38 2/11 minutes past 4. After solving this, 38 minutes 2/11 minutes past 4. This is from plus sign. This is from plus. Now after solving this, you will get one value. 5/15 minute past. 5/15 minute past. After solving, t is equal to 5/15. 5/15. 5 no. After solving this, you will get some value. 5/15. 5/15 minutes past 5 minute, ठीक है, past 4. This is 2 value. Why? Because right angle is possible in the clock 2 times. So we are getting the 2 possible value at which the clock of minute hand and hour hand will make an angle 90 degree. दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो हमने क्या किया, 2 रिजल्ट हमने निकाले यहाँ पे. ओके, थैंक यू सो मच. दिस इज योर क्लॉक, बट यू कैन सॉल्व इट वेदर इट इज 180 डिग्री, वेदर इट इज 90 डिग्री, वेदर इट इज 0 डिग्री. ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, एंगल की जगह पे आपको पुट करनी है, जितनी एंगल आपकी बन रही है वो आपको पुट करना है. उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, आपको रिजल्ट आएगा. ठीक है, सो दिस इज योर क्लॉक पार्ट. सो next time we will continue with the calendar. Thank you so much.